Hello students, good morning. Now we are going to discuss about maxima and minima. We have already discussed in previous lecture, that is approximation rate measure, and now we are going to discuss maxima and minima. Taylor's normal we have already discussed, and it is increasing also. So maxima and minima means what? So the word maxima means maximum value. अगर कहीं मैक्सिमा लिखा है इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम वैल्यू. अंडरस्टूड? मैक्सिमा अगर है तो क्या होगा? वो मैक्सिमम वैल्यू होगा. और अगर मिनिमा कहीं लिखा है इसका मतलब है मिनिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम मींस द पॉइंट वेयर द फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू. उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा. और द फंक्शन विच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू. सो हियर let me explain first maximum value of the function. Suppose I am giving you the graph. This is x and y, and here this point will attain the maximum value, that is f(a), and here I get minimum value, and here I get, that is f(a) plus. Understood? So where function where it gives maximum value come present to the neighborhood point. इसका मतलब क्या है? नेबरहुड का मतलब है कि आपके पड़ोसी, आपके राइट साइड के पड़ोसी, पड़ोसी और पड़ोसी. इसका मतलब क्या है कि नेबर में जो घर है आपका, उनके कंपेयर में आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए. दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू. सो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है इसका. द फंक्शन which has maximum value come present to the neighborhood point. उस फंक्शन को हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू होगा जहां जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा नेबरहुड पॉइंट से, is called maximum value. So maximum value here fa is greater than equals to fx at x equals to a for all x belongs to integers. Integers का मतलब होगा वैल्यू गिवन होगा उसमें, राइट? पॉजिटिव और नेगेटिव. Here fa is called maximum value and the point x equals to a is called the point of maximum. यहाँ पे जो fa है, fa क्या आपका पास, fa क्या बोलेंगे इसको? मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे इसको, राइट? एंड a किस पॉइंट पे दे रहा है? a पे दे रहा है. इसका मतलब क्या होगा? x equals to a is the point of maximum. ये पॉइंट क्या होगा आपका? मैक्सिमम होगा. सो अगर मैं मिनिमम की बात करूंगा तो जस्ट रिवर्स. मिनिमम में क्या होगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा. सो उसमें हम लिखेंगे ये फंक्शन वर्थ है, फंक्शन which has the maximum minimum value come present to the neighborhood point. So students pause the video and note down. Let me explain. इसी में चेंज कर देता हूँ आपको कि मिनिमम क्या होगा, मिनिमम का मतलब क्या होगा, मैं इसी में चेंज कर देता हूँ. देखिए मिनिमम x equals to here a plus here a minus. This is y equals to fx graph, right? So minimum value of function, minimum value of function, the function which has minimum value comparison to the neighborhood point is called minimum value, right? Here fa is less than fx. fa जो होगा fx के कंपेयर में क्या होगा? सबसे कम वैल्यू होगा at x equals to 0 for all x belongs to I integer. Here fa is called minimum value and the point x equals to a is called point of minimum. पॉइंट ऑफ मिनिमम, राइट? सिंपल पॉइंट ऑफ फंक्शन है कि जहां पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा उसको हम बोलेंगे मिनिमम वैल्यू, जहां पे मैक्सिमम देगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पे देगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और जिस पॉइंट पे मिनिमम देगा दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मिनिमम. अंडरस्टूड? सो I am giving you one question here. Find the maximum and minimum value of
fx equals to mod sin x plus 3 sin x plus sin 4x plus 3 जो दिया हुआ है, ये मॉड में दिया, आपको बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा। एज यू नो डोमेन अगर इसका निकालना चाहता है, डोमेन का मतलब होगा कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, जहाँ पे फंक्शन क्या होता है आपका डिफाइन होता है। फंक्शन की जहाँ हम बात करेंगे, जहाँ पे फंक्शन क्या होगा डिफाइन होगा, उसकी पर्टिकुलर एक वैल्यू आएगी, the all possible, or you can say that the set of all possible value of x is called domain of x. So अगर हम डोमेन की बात करते हैं, यहाँ पे रियल नंबर इज द डोमेन फॉर ऑल x belongs to, this is the sign of for all, इसको आप for all बोल सकते हैं, for all of x belongs to a number. We know that the maximum and minimum value of sin x is +1 and -1. Sin x is always fluctuate in between -1 and +1, क्योंकि -1 से छोटा हो नहीं सकता इसका वैल्यू और +1 से इसका वैल्यू बड़ा नहीं हो सकता। तो मैंने लिखा sin 4x is lies in between -1 to 1, right? Here -1 plus 3, अगर plus 3 ऐड किया गया इसमें, ऐड plus 3 थ्रो, अगर दोनों साइडों में ऐड करने पे क्या है -1 plus 3 sin 4x plus 3 and 1 plus 3. So apply mod both sides, जब मैं mod इसमें अप्लाई कर दूंगा, mod 2 mod sin 4x plus 3 and mod 4, that is mod 2 की वैल्यू करूंगा तो 2 होगा and 4 mod sin 4x plus 3, here this is fx and mod the value of mod 4 is 4. So you can write here 2 is less than equals to fx, this is the value of fx, and less than equals to fx is less than equals to 4. So the minimum value of fx की अगर minimum value की बात करूंगा तो maximum value कितना होगा, maximum value is 4 होगा, understood? So pause the video and go on. Another question here, देखिए इसका भी बताना है कि maximum और minimum value क्या होगा। So minimum value की अगर हम बात कर सकते हैं इस फंक्शन में, देखिए minimum value की अगर हम बात करेंगे, so the minimum value of fx is क्या होगा, minimum of fx if when mod x plus 2 fx is -1 if the value of mod x plus 2 tends to 0, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 होती है तो -1 ही तो होगी। अब अगर इसकी मैं डोमेन की बात करूंगा तो mod x है, mod x डोमेन ऑफ x, दैट इज क्या होगा, हम बोल सकते हैं ना कि ऑल रियल वैल्यू। सो हियर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज इंफिनिटी, जब x की वैल्यू इंफिनिटी यहां रखोगे आप तो fx की वैल्यू विल ऑलवेज कम इन टर्म्स ऑफ इंफिनिटी। सो हियर देयर इज नो एनी मैक्सिमम वैल्यू, नो, देखो सिंपल नो मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सवाल है कि कहीं पे अगर मॉड टर्म में दिया हुआ तो मिनिमम, ये जब 0 होगा तो मिनिमम वैल्यू दिया है, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करूंगा तो मैक्सिमम में क्या होगा, x तो आपका क्या होगा डोमेन, मतलब डोमेन अगर है तो सारी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इसकी। जब मैं x की वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा तो x भी हमारा इंफिनिटी आएगा ना, जब ये इंफिनिटी आ जाएगा इसका मतलब क्या होगा, इंफिनिटी क्या है, इंफिनिटी में थोड़ा सा निकालोगे या थोड़ा अगर आप उसमें ऐड करोगे तो देयर इज नो एनी इफेक्ट। सो अनदर सवाल, सो द मैक्सिमम वैल्यू इज इन नो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज -1 हियर। अनदर क्वेश्चन, सपोज आई एम गिविंग यू, मैंने आपको दे दिया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx plus 1 plus 3, हियर अगेन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, सिंपल सवाल है, एक नंबर का आता है मिनिमम वैल्यू, दैट इज 3 if when at mod x plus 1 0, क्योंकि इसकी मिनिमम तो 0 हो सकती है ना, अगर 0 होगी तभी ये 3 आएगी। एंड मैक्सिमम वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, हियर fx टेंड्स टू इंफिनिटी, सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। Again you can write. So there is no maximum value. So students, pause the video and note down.
छोटा सा सवाल है, सपोज x प्लस 1, मैंने पूछा मैक्सिमम बताओ यार, -1 से लेकर 1 तक, -1 से लेकर 1 तक मैंने बोला कि मैक्सिमम बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x कहाँ से कहाँ जा रहा है, -1 से 1 जा रहा है। तो यहाँ पे अगर फंक्शन लाई कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो सोल्यूशन देखते हैं। अगर हम x की बात करेंगे जो गिवन दिया है x प्लस 1 एंड x इज लाइक इन बिटवीन, कहां से कहां जा रहा है, दैट इज -1 से लेकर 1 तक जा रहा है, क्लोज इंटरवल जा रहा है। तो अगर ये अंदर इक्वलिटी होल्ड करेगी, जब इक्वलिटी होल्ड कर रही है इसका मतलब ऐड करो इस फंक्शन में, ऐड करो -1 प्लस 1, दैट इज x प्लस 1 plus 1. So this function will give 0 here and x plus 1 2. So you can write finally fx is less than 2. So the minimum, यहाँ पे अलग है, यहाँ मॉड नहीं, minimum value of fx is 0 and maximum value of fx is, मिनिमम वैल्यू इसका क्या है, 0 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका 2 है। सो जितने भी सिंपल क्वेश्चंस होगा उस सारे सवाल को हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो and note down